This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आर्थिक जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और दूसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti, and Dr. Yamini. Welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend COP28 World Climate Action Summit beginning in Dubai tomorrow. Malaysia to allow visa-free entry to Indian citizens from the 1st of December. And oil prices fall in global crude market. कल से दुबई में विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। मलेशिया ने 1 दिसंबर से भारतीयों के लिए अपने देश में वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट। श्रोताओं, गुरु नानक जयंती के कारण आज घरेलू शेयर बाजार बंद रहे। यामिनी जी, आज तो बाजार बंद रहे। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आपको क्या लगता है बाजार की चाल कैसी रहेगी? जी देखिए, कुछ पिछले अगर आप सत्र देखें बाज़ार के तो उसमें देखा गया है कि उसने अच्छा ट्रेड किया है और काफ़ी हद तक जो मार्केट्स हैं वो आने वाले जो पीएमआई डेटा है या आपका जो एग्ज़िट पोल की इंफॉर्मेशन है और जो डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसको देखते हुए अपना रुझान रखेगा। उसमें ख़ास तौर पे ये भी ज़रूरी है समझना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रहा है आरबीआई के द्वारा, उसके तहत जो Q2 की ग्रोथ है वो भी 6.5% के आसपास है, जिसके अंदर जो है माना जा रहा है कि महंगाई दर को भी काबू में रखा जाएगा और जो आपके ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। So, Dr. Yamini, October was not really a very good month for the Indian markets, but November has actually seen the markets stabilize. And we have, so the range within which the up and down movement has been by and large is stabilizing. What do you feel actually? So the festive season has gone off well. And the festive season in the West is going to start with Christmas and all the related holiday season coming. So the markets are again going to take a move. How do you see December panning out vis-a-vis Western funds? Well, the quarter usually from October to December is always a quarter with a lot of festivities across the world for all communities, and it is usually a consumer based quarter, and most of the GDP numbers tend to be higher at that point. Also, when we talk about festivities, usually it is the ending quarter of the year, right? So many people have their savings or which they save from different means, and they intend to spend it at the end of the quarter because they have something in hand. So that also adds on to the value. Another important aspect is how the 5 IPOs or the other IPOs are likely to come in. Also, what is likely to be the the earnings which will make a difference. But some factors like the global slowdown and the geopolitical tensions can be some factors which can affect the market. Right. So now we'll take time out to welcome from Kolkata. First caller, Vikas. Vikas, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। Namaskar. ईवी सेक्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ।
किस सेक्टर के बारे में आप पूछना चाहते हैं? ईवी ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्या पता करना चाहते हैं आप? कंपनी विशेष तो नाम नहीं लेते, तो उसको पी 0 दिखाई जा रहा है। अगले साल, पिछले साल नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कंपनी, लेकिन उनका शेयर मार्केट बढ़ रहा है। क्या ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहिए जी देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल? जी देखिए, कभी जैसे जहाँ तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी हद तक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, और उसके लिए सब्सिडीज़ भी दी हैं। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करें। स्क्रैपेज पॉलिसी भी लाई गई है जिसका फ़ायदा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलेगा। ये भी देखा गया है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं उनका सीधा असर आपके जो है क्लाइमेट पे पड़ता है, क्योंकि जो एमिशंस हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। बिज़नेस ग्रोथ ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, बिज़नेस सेक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है किस तरह की प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में कितने तक की बेच सकती है। तो ये जब भी आप लॉन्ग टर्म में निवेश करें तो ये ज़रूर देखें कि बिज़नेस क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, और उसके जो फंडामेंटल्स हैं कि कौन उसका मैनेजमेंट है और वो कैसे आगे बढ़ना चाहती है। एनुअल रिपोर्ट्स से देख करके आप उसकी रेशियोज़, जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब देख करके उनको पिकअप करें। इसी बीच जयपुर से हमारे अगले कॉलर हैं जितेंद्र जी। नमस्कार, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है। हाँ, अपना प्रश्न जी। हाँ सर, जैसे अभी कल परसों से न्यूज आ रही है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऐसा जो नॉन प्रॉफिटेबल जो है वो शायद हमारे कहते चैरिटेबल ट्रस्ट होगा शायद, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाले कि है क्या वो चीजें। जी देखिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस प्राइमरीली उन स्टॉक्स को डील करते हैं जो ज़्यादातर आपके कंपनी स्पेसिफिक नहीं होते, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, पर मार्केट से कैपिटल रेस करना चाहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर के। तो चाहे वो ट्रस्ट हों या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हों या एनजीओज़ हों या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हों या कंपनी भी हों, और वो सोशल कॉजेज़ पर इन्वेस्ट करती हों, तो उनको जो है एक तरीका देती है कैपिटल को रेस करने का। We have our next caller, Mr. N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Prasad, welcome. Your question, please. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening, sir. N.R. Prasad from Bangalore. Right, sir. My question is bit length. Please listen to this and answer this. See, I just want to know the exact meaning of the market cap. See, for example, I'm referring to a factory. Okay, whether this market cap includes machineries inside the factory building, assets, inventory, raw material, and outstanding. If this factory also has got a sales outlets, the offices situated all over India, does it include in the market cap? And finally, if the market share of this quoting in the face value of this company, say it's 5 rupees, and market cap is indicated as 20,000 crore in the net. What is the difference? What is the relationship between this 5 rupees face value and this 20,000 rupees market cap indicated on the for that company? Thank you. This is my question. So you've asked what is market capitalization. When we talk about market capitalization, it is the number of shares of a company which are free floating in the capital markets multiplied with the price of the share. So whatever price at which the share is trading, when you multiply it with the total number of shares that are trading in the market, they are called market capitalization. Now, usually machines, assets, outstanding, and officers or other things do not play a role directly into the market capitalization. But what plays a role is the fact that the net worth of the company and its potential is dependent upon the assets, which include the machines, assets, outstanding employees, or the other activities which the company does.
and based upon that valuation or its profits or its growth or its future estimates, the market capitalization tends to rise or decline as per the expectations of the investors. The investors, depending whether the company will do well, place a higher value or a premium on the company. Now you asked what is a face value. Face value is the value at which the share is sold and is given in the certificate of the share or the stock that is there. Now higher to this particular face value, the company can be trading. That is called the price in the market at that particular day or whichever point of time it is trading. Now when you multiply it with the total number of shares or that the company has issued, that is then, or and are floating, the floating means that is trading in the market, that then gives you 20,000 crores or whatever, 30,000 crores or whatever crores the company may be valued at. पीएम नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 2 दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में दुबई जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत COP 28 का यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। UNFCCC के देशों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को गति प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन भारत की G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है और भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को COP 28 आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। Dr. Yamini, when we talk of climate change, and I think there is more and more recognition across the world that it's not a localized problem. We're all connected at the hip. One country's carbon footprint is bound to affect another country's environment challenges. And it's taken many years actually to build that consensus. I think one of the challenges, and India has been pushing that at a lot of international fora, is climate financing. Asking developed and industrialized countries to say that you have a large carbon footprint and you need to help mitigate that with financing. Where are we on that, and where will this summit take this? Well, I think India has already very specifically placed all its stands in terms of its commitment towards climate, whether it is the G20 agenda when it took over the presidency, clearly indicating that it's committed to the climate change, giving example of Vasudhaiva Kutumbakam, lifestyle, environment, and various other factors. Right. It also clearly gave the Panch Tantra, which was a prime concern as to how the environment should be saved. Another important aspect is that India strongly, culturally and traditionally has always been very environment friendly, whether it is preserving its rivers or preserving its forests or undertaking activities which have been very grounded. I can give examples like mud utensils, banana leaves being used as plates, pattals being used as a normal evidence, as well also when we talk about other aspects that are there in terms of how people have been constantly guided in terms of taking care of the environment through the teachings. Right. And through other aspects. They are also an important aspect. So India's commitment, whether it is renewable energy and its installation, or it's in terms of adopting to electric vehicles, or it's with respect to any other specific climate change or climate financing, it has been looking at it. Institutions internationally and nationally have been funding them, and there has been a consensus that has been drawn across the globe with the summits that the developed nations must contribute towards the developing nations, both financially as well as in terms of decreasing their carbon footprints, so that
many of the developing and the underdeveloped nations can increase their standards of living and can also at the same time match with the particular requirements that the environment needs, because we all share the same air, water and the earth. Absolutely. Well, Yogesh from Delhi, you're our next caller. Thank you for your patience. Please ask your question. थैंक यू सो मच। नमस्कार पूरी टीम को। मेरा नमस्कार। सवाल ये है कि मैम वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट था कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो क्या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है स्टॉक ट्रेडिंग के मुकाबले में? इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? दूसरा मैम ये था कि एक सवाल था कि माइक्रो कैप्स की कई बार हम बात सुनते हैं, माइक्रो कैप के स्टॉक्स हैं, तो स्मॉल कैप के बाद किस मार्केट कैप के हिसाब से उनको माइक्रो कैप में उनको आंका जाता है? जी देखिए, जहाँ तक डेरिवेटिव्स का सवाल है, ये दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, जिसका मतलब है कि कोई अपनी जो मूल्य है वो किसी भी जो अंडरलाइंग एसेट है, जैसे करेंसी है, कमोडिटी है, उससे डिराइव करता है। और क्योंकि इसकी अपनी वैल्यू नहीं होती और उस एसेट की वैल्यू होती है और उससे बनती है, तो और ज़्यादातर जो डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भविष्य में जो एक कोई सीमा हो या कोई प्राइस हो उस पर निर्भर करती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होते हैं। और जब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो क्योंकि वो फ्यूचर की प्राइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो स्पॉट ट्रेड्स हैं और जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं उनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि वो जो है मार्केट्स को ख़राब कर सकते हैं या मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पर क्योंकि डेरिवेटिव्स एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ होते हैं, जिसमें लोग अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे फॉरेन करेंसी की वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए बहुत समय तक फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल हुए, ऐसे ही कमोडिटीज़ में या और जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक आपका माइक्रो कैप का सवाल है, वो स्मॉल कैप से जो नीचे के स्तर के होते हैं उन्हें माइक्रो कैप कहते हैं, या जो बहुत कम कीमत के होते हैं उन्हें कहते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के सोलापुर से हमारे कॉलर हैं अजीत। अजीत जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। Can you please be a little louder? What is gift nifty? Yeah, gift nifty. What is nifty? Gift गिफ्ट निफ्टी। आपका सवाल पूरी तरीके से नहीं अच्छा, आ पा रहा हमसे। आप गिफ्ट निफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं? ओके जी Ajit ji, actually, your voice is cracking. आप एक काम करिए, why don't you try reconnecting? We will give your call first priority. एक बारी फिर से करिए and maybe किसी और लाइन से या थोड़ा जगह बदल के करिएगा। ये सिंगापुर के गिफ्ट निफ्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, ये भी संभव है? जी मुझे इसके बारे में let's wait for his call to come again. Okay. Right. Meanwhile, we have another story, and this is for travel hungry Indians. Good news for them. Malaysia will scrap entry visa requirements for Indian citizens visiting the nation beginning the 1st of December this year. Now, Indian nationals may stay up for up to 30 days visa-free in Malaysia. Prime Minister Anwar Ibrahim made this announcement in a speech at the People's Justice Party's annual Congress in Putrajaya yesterday. Malaysia is counting on extra tourist arrivals and their spending to support economic growth. Dr. Yamini, I think traveling, spending of tourists, and yesterday the Prime Minister also spoke about, being vocal for local, and he spoke about weddings and how Indians go to other countries. So like Malaysia is welcoming tourists, wanting to understand something of the tourism industry within India. I think it's a sunrise industry. Stocks of many of hotels and hospitality industry are also doing well. So how do you see this poise? Because now, as you were only sharing earlier before when we were having a conversation before the program came on air, that COVID had kept us housebound for very long. And now there's a lot of tourism, some of it revenge tourism, so to say, is taking place.
Well, when we talk about tourism, I think it has been a better time for the tourism industry, primarily because there is a pent-up demand. As because of COVID, a lot of people did not travel, and now they want to travel as they are vaccinated, and the fear of COVID is not there. Also, India seems to be a good destination during October to December and till February or March, because this is a winter time in India. Also, summer destinations are good, but depending upon the travel requirements. Besides that, these are the festive times, which are also culturally very enriching for people to visit. Another important aspect is that there is a lot of development in terms of the touristic sites that India has. Intrinsically, there has been a lot of work that has been going on in terms of developing the infrastructure, especially the roads, railways, and others. So, which has made it convenient to travel locally as well as to travel interstate, that is there. Again, in the G20, if you remember, has been a crafts mela, and the kind of culturally cultural strengths that were reflected to many international tourists, and the success with which the G20 summit concluded did send a good message across the world that tourists are welcome to India. So that also adds. Besides that, the internal tourism in terms of religious tourism or other tourism is also growing, which is being given sufficient amount of impetus by the government also. Also, if you look at the hotel industry did suffer the most, and the travel agents or the others suffered most during that time. So this time they would like to cash in to the maximum number that they can, because of the rising demand and the neutral stance that India has. Absolutely. Ajit ji is reconnected from Solapur in Maharashtra. Ajit ji, आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल पूछेगा प्लीज. अजीत जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं है. हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. वी हैव फ्रॉम दिल्ली नवनीत. हेलो. हाय नवनीत, वेलकम टू द प्रोग्राम. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. थैंक यू मैम. मैम, अभी हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे कोई कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन में जहां हम रिप्रेजेंट होने जा रहे हैं एंड ऑफ द मंथ. जब हम बात करते हैं इंडिया के कार्बन फुटप्रिंट की, तो जो हमने जो डीवैल्यू किया अपने नेचर को, उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, नॉट बाय स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड इफ वी डू दैट वे, देन वी मस्ट बी वेरी पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. वी नॉट मोस्टली जो है हमारा काम पेपर्स में है, मगर गंगा, जमुना, हिमालय कहीं भी नजर उठा लीजिए, we going through an environment disaster. So how can you say कि it's, we don't have to toe the government line कि we doing all good. It is not about towing anyone's line here, but it is about what concerns are put forward. It's important to understand when we talk about environment, there is a crucial aspect called sustainability, on which most economies are today working. And there were times in India that we had seen droughts, we had seen floods, we had seen pandemics. And there is also a time in India when the development has taken care of many of these aspects. It is not that earthquakes or floods or other aspects are not happening, but the natural disasters are being taken care at a faster pace and can be detected earlier, which has been one of the effective mechanisms of the overall governance systems in India. What becomes important is the priorities that we place towards protecting and saving the environment to ensure that it is available to the future generations, which marks sustainability for any country. And the commitment of the governance is important towards that.
और अब एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। जापान की सेबा मुद्रास्फीति 45 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने और संपत्ति शेयरों की चाल से चीनी बाजारों में गिरावट के साथ एशियाई बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के कारोबार के अंत में जापान के निक्केई में 0.5% की गिरावट आई। चीन के शंघाई कंपोजिट और सिंगापुर की गिफ्ट निफ्टी में 0.3% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.2% गिर गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सपाट बंद हुआ। यूरोपीय शेयरों में भी दिन के कारोबार में नुकसान देखा गया क्योंकि निवेशक सप्ताह के अंत में प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय मुद्रास्फीति डेटा का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट आई। फ्रांस का कैक 0.1% नीचे कारोबार कर रहा था। यामिनी जी, क्या कोई खास वजह आपको दिखती है? कोस्पी के अलावा जो है नुकसान ही हम देख रहे हैं एशियाई और यूरोप के बाजारों में। जी देखिए, एक ओवरऑल सिनेरियो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का। एक ओवरऑल ये भी सिनेरियो है कि रिसेशन है, और अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक कोविड का असर भी रहा है इकोनॉमीज़ के ऊपर, क्योंकि लोगों की काफ़ी हद तक सेविंग्स और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लाइवलीहुड्स प्रोटेक्ट करने में और मेडिकल इमरजेंसीज़ को हैंडल करने में लगी हैं। तो उसकी वजह से हमें खासा असर संसार भर में दिख रहा है। जी, एक और जिज्ञासा मेरे मन में है। गोरा जी ने भी सवाल किया था कि नवंबर की बात हुई, दिसंबर की बात भी अभी आने वाली है। आप ये बताइए कि भारतीय शेयर बाजार की चाल हमने देखा, उतार भी देखे, चढ़ाव भी देखे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है, रूस यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, वो इजराइल फिलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी पर क्या ये कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से पड़ा है? लेकिन हमने यहाँ पे अच्छा भी देखा है बाजार को, तो आप इसे किस रूप में देखती हैं? जी देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हो या इज़राइल हमास की जो है लड़ाई को लेकर के हो, उसका सीधा असर बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है। जैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होती हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस की तरफ जो बढ़त देखते हैं, एक इन्वेस्टर्स में आशंका होती है, तो जो कैपिटल फ्लोज़ हैं वो अपनी तरफ से अलग हो जाते हैं। बहुत निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर या कोई लंबे दौर के लिए, वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है, उसके तहत जो पैसा बाज़ार में आना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो नहीं आता है। और जो दूसरा असर हम देखते हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से होती है, कि वो जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है और जो डिवाइड होता है, उसकी वजह से किस तरफ आप जाएं, उसका असर आपको सीधा जो है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है। Right. Let's take a look at the oil prices. Oil prices fell today as investors are eyed the November 30th OPEC Plus meeting for an agreement to manage supplies in 2024. In intraday trade, Brent crude was trading at $79.44 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $74.38 per barrel when reports last came in. Dr. Yamini, we've seen that globally oil prices are under pressure. I mean, they're falling, and it was forecast a few months ago that no, they're going to go across 100, but whatever the reasons, and we know that there are many. Now, wanting to understand from you that oil producing countries are under pressure now to maintain the oil prices? Well, there are many countries in the OPEC and oil exporting countries which are dependent upon oil, and they have been affected in the previous years, primarily because the demand had gone down. Besides that, there has been a recession overall across the world, which has also affected the markets and their demand. So they would like to get their revenues, and for that either the price may be increased by cutting the supply, or the supply may be increased. Right. Dr. Yamini, thank you so much for coming to our studio. And listeners, now before we close, a quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend COP28 World Climate Action Summit beginning in Dubai tomorrow. Malaysia to allow visa-free entry to Indian citizens from the 1st of December. And oil prices fall in global crude market. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.
Market Mantra.